Yesterday I asked devotees who visit Kurmagram, and there was no one. तो कल महाराज ने प्रभु से पूछा था कि जो साउथ में कुरुग्राम है वहाँ पर कोई गया है कि नहीं, तो उस वक्त हम सब यहाँ पर थे तो कोई गया नहीं था, ऐसा हमने हाथ ऊंचा नहीं किया था. I was surprised. तो महाराज बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे. Yeah. I was thinking everybody, no? महाराज को ऐसा लगा कि सब जानते होंगे. Today more devotees. So someone is today. There is someone who. तो आज बहुत ज़्यादा भक्त हैं. यहाँ पर जो भक्त हैं इसमें से कोई कुरुग्राम गए हैं तो हाथ ऊंचा कर सकते हैं. No one. Maharaj, mostly every devotee in Nandagram, they visited Nandagram. Nandagram. Yeah, There is another one also, Guru. There is another one, Bhaktivinoda Swami. Another is in Punjab. Badrikashram. Badrikashram. I've been there also. There is in the beginning. In the beginning. But Kurmagram is increasing. Then make also now one. Then make also one building for the guest house. तो पंजाब में भी एक और. No Punjab. Kurmagram. तो कुरुग्राम में जो अभी पूरा काफी डेवलप हो चुका है और वहाँ पर अभी गेस्ट के लिए गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं. Yeah. This is the programs of the future. तो ये भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. On the future. When I say future, I don't speak about next year. I speak about maybe 100 years. मैं भविष्य का बात कर रहा हूँ, मतलब एक साल की बात नहीं, लेकिन बहुत ही लंबा समय, यानी कि 100-200 साल तक. Yeah, because will be more and there will be our generation will disappear after few years. तो कुछ साल के बाद हमारी जो जनरेशन है वो डिसअपीयर हो जाएगी. But other the Gurukulis, when the actual Gurukuli will be grandfathers, there will be more and more people in this kind of this Vedic farm. तो वहाँ पर जो अभी गुरुकुल के बच्चे हैं वो जब दादा हो जाएंगे तो उस वक्त वहाँ पर काफी अच्छा डेवलप हो गया होगा. Yeah. Because many devotees will born in Vedic farm. वहाँ पर जो वैदिक खेती है, खेती का जो पूरा कृषि समुदाय है, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अभी जन्म भी ले रहे हैं. For those who are not born in the farm, it's little bit difficult. तो जिनका जन्म ऐसे कृषि समुदाय में नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही मुश्किल है. Yeah, because you live in the city, it's different. It's different. हम शहर में रहते हैं इसलिए बहुत ही जीवन मुश्किल से भरा है. It's different for families. This is perfect for families. तो जो परिवार है जो उनके लिए ये कृषि समुदाय बहुत ही अच्छा है. But specifically for the family who born there. और विशेष करके जो परिवार का वहाँ पर जन्म हुआ है ऑलरेडी कृषि समुदाय में, उनके लिए तो बहुत अच्छा है. Other way, it's a little bit difficult. From one day to other day, you have no any more light. You have no water. You have to take water, and the most of people don't use any shoes there. तो वहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, व्हीकल नहीं है, कुएं में से पानी निकालना है और ज़्यादातर भक्त वहाँ पर चप्पल भी नहीं पहनते हैं. The Gurukuli never use shoes. तो जहाँ विशेष करके गुरुकुल के जो बच्चे हैं वहाँ पर वो चप्पल नहीं पहनते. No chapal, no.
And the Gurukulis is, those who are born there, for them this is normal life. तो जिनका जन्म वहाँ पर हुआ है उनके लिए तो ये सामान्य जीवन है. The Gurukulis in the morning, after breakfast, then go to the cows, to the field. तो गुरुकुल के बच्चे सुबह का प्रसाद ग्रहण करके वो गायों को चराने के लिए फील्ड में चले जाते हैं. And then are in contact with the cows, then know the cows by the name, and then are one group of friend, तो वहाँ पर friendship. तो वहाँ पर गायों के साथ वो रहते हैं. गायों का अलग अलग नाम है, अलग अलग बच्चे भी उनके साथ होते हैं. ऐसे मित्रता होती है सबकी अंदर. Yeah. For the children is perfect, the perfect spiritual life. तो बच्चों के लिए एक बहुत ही परफेक्ट आध्यात्मिक जीवन है. Yeah. I saw on December the Gurukulis take in morning time, take the cows, engage in the one bull car, and go 10 kilometers or in other village to distribute book. तो मैंने दिसंबर में जब लास्ट टाइम था तो मैंने देखा गुरुकुल के बच्चे जो है वो बैलगाड़ी लेके करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव में जाके पुस्तक वितरण कर रहे थे. So we have to think about future. तो हमें इस प्रकार से भविष्य के लिए सोचना चाहिए. Have to think about the future. हमें सोचना चाहिए भविष्य के लिए. For the children, they are very happy there. But for example, in Italy, there one friend of mine, Prabhupada disciple, he got 2 children, and he bring the 2 children in the Gurukuli in India. तो इटली में मेरे एक मित्र हैं जो प्रभुपाद के शिष्य हैं. उनके 2 बच्चे हैं तो वो इंडिया में गुरुकुल में पढ़ाने के लिए वो इधर लाए. And after they go back, the children stay. I don't remember if the children was in Vrindavan or in Mayapur. Then it was in the Gurukula, and the father and mother go back to Italy. तो मुझे पता नहीं है वो अभी कौन से गुरुकुल में थे, वृंदावन या मायापुर में, लेकिन वो अपने बच्चों को यहाँ इंडिया में गुरुकुल में छोड़ के वापस इटली चले गए. So the children born in Italy. तो बच्चे जो है उनका जन्म तो इटली में हुआ. So was strange for them. तो ये उनके लिए बहुत ही नया था. But it was strange the first day. The second day, then start to get contact with the other children. वो पहले दिन के लिए उनके लिए नया था, लेकिन दूसरे दिन से दूसरे बच्चों के साथ उन्होंने संपर्क सब शुरू हो गया उनका. So for them, after a few days, then forget Italy. तो कुछ दिनों के बाद वो इटली को भूल गए. Also, but the father and mother got attachment. लेकिन माता पिता को उनसे बहुत ही आसक्ति थी. This is the problem. तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है. Then forget the aim. The aim is we must go back to Vaikuntha. This is the aim. हम हमारा जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं जो है भगवत धाम वापस जाना. But the father and mother forget that. लेकिन माता पिता जो थे वो उसको भूल गए. Then get attachment. How I then, what they do? Maybe they need something. Maybe there is problem. There was in anxiety. The children play and तो उनको बहुत ही मतलब एंजाइटी में आ गए, बहुत ही चिंतित हो रहे थे अपने बच्चों के लिए. वो क्या कर रहे होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे वहाँ पर जीते होंगे, ऐसे उनको एंजाइटी में आ गए वो दोनों. So after 2 years, then the father and the mother come to take the children. I asked them, why you bring the children in Italy to go in the school with the Jana Sangha? Why do they? And he told me,
the father, he told me it was impossible for us to live without them. Because every day, the mother every day says, see, listen, I think there is a problem. Every day some... So after 1.5 years or 2 years, something like that, then came and took the children and bring. तो करीब 2 साल हुआ तो वो दोनों वापस इंडिया आ गए अपने बच्चों को लेने के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों लेके जा रहे हो वापस? तो वो बोले कि हम हमारे बच्चों के बिना नहीं रह सकते, और विशेष करके उनकी माता जो है हर रोज कोई ना कोई दिक्कत कर रही है, मेरे बच्चे कैसे होंगे, क्या करें, इसलिए वो 2 साल के बाद बच्चों को वापस लेके चले गए। Now the children are near about more or less 30 years old, 30 years old. अभी जो बच्चे थे वो 10 से 13 साल के। Then drink beer, और वो वहाँ पर बियर पीना शुरू कर दिए, smoke marijuana. और वो सिगरेट स्मोकिंग करना भी शुरू कर दिए। So for this mistake, they must to born again. तो ये भूल के कारण उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। Who do the mistake? तो ये गलती किसने किया? Father, mother, by attachment. ये माता पिता की आसक्ति के कारण हुआ। For that is sometimes the problem is the attachment. The problem is attachment with the children. But other way is even if it's Kali Yuga, and sometimes there is problem also in the Gurukuli, but that is what Prabhupada want. तो ये ज़्यादातर समस्या जो है आसक्ति के कारण होती है। हो सकता है कलयुग के प्रभाव के कारण ये सारी समस्याएं जो है वो आएगी, विशेष करके गुरुकुल के बच्चों के लिए। We must to think about the future because we are. Not everybody get my age, but I mean we are a little bit old. तो हमें इस भविष्य के लिए इस प्रकार से हमें गंभीर होना पड़ेगा, विशेष करके मेरे जैसे उम्र के जो ज़्यादा उम्र हो गई, लेकिन आप सब भी है उम्र, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए भविष्य के लिए, गंभीर होना चाहिए। Speciality in the who follow the line of Bhaktivedanta Swami, this is must to follow very strictly everything what Maharaj say, because is the more actually, in my understand, is the best, is the more serious way in International Society for Krishna Consciousness, and that is he writing everything. तो विशेष करके जो भक्तिविकास स्वामी महाराज के फॉलोअर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही गंभीरता से इस चीज़ को लेना चाहिए, और क्योंकि जो इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में मैं देख पा रहा हूँ कि इस प्रकार से वही है जो इस प्रकार से गंभीरता से सब लेते हैं। In my understand is who the spiritual master who follow more seriously Srila Prabhupada. तो मेरे अनुसार जो आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद को बहुत गंभीरता से फॉलो करते हैं। So the disciple get opportunity to find the perfection more easily as the others. तो ऐसे उनके शिष्य जो है वो बहुत ही इजीली सरलता से इस चीज को गंभीरता से ग्रहण कर सकते हैं। So if someone get opportunity, sometimes it's good to spend 3 days in Kurma ground. तो अच्छा है सब इसका लाभ उठाइए, कुर्मग्राम में कम से कम 3 दिन रहने का। Yeah, don't need to go with all family like that because it will be maybe difficult. But it's important to go and see what the guru want and how they follow the guru. It's important. तो ये बहुत ही जरूरी है, आप सब वहाँ पर जाइए और देखिए कि हमारे जो गुरु हैं वो क्या चाहते हैं, किस तरह से जीवन जीना चाहते हैं, इसको देखना चाहिए हमें। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Rama, Hare Hare. Bhakti Vikas Swami Maharaj ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayan Sri Chaitanya Manovistam Stapitanya Navutale Svayam Rupa Kadamayam Dadatyeva Padam Tikam Vandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sashivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinavantu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Brisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare. So we read from first canto Srimad Bhagavatam, chapter 15. तो आज हम पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 से Slok 28. 29. Ah, yes, 29, yeah. श्लोक संख्या 29. Yeah, we read it 28. Slok 29 start by the word in Sanskrit. Vasudevangri Anudyana Parimrita Rumasa Bhaktya Nirmatita Ashesha Kasaya Disanaha Arjuna Vasudevangri Anudyana Parivrimita Ramasa Bhaktya Nirmatita Shesha Kasaya Disanorjuna Vasudevangri Anudyana Parivrimita Ramasa Bhaktya Nirmatita Shesha Kasaya Disanorjuna Vasudevangri Anudyana Parivrimita Ramasa Bhaktya Nirmatita Shesha Kasaya Disanorjuna
Bolo. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Matajis can read from there. It's too far. Someone want to read, please? Someone else? Vasudeva Angri. The lotus feet of the Lord. भगवान के चरण कमल. Anudhyana. By constant remembrance. निरंतर स्मरण करने से. Parivrimita. Expanded. विस्तीर्ण. Ramasa. With great velocity. अत्यंत वेग से. Bhaktya. In devotion. भक्ति से. Nirmatita. Subsided. शांत हुआ. Ashesha. Unlimited. असीम. Gatsaya. Dint. प्रहार. Disana. Conception. धारणा. Arjuna. Arjuna. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Arjuna, constant remembrance of the lotus feet of Lord Krishna, rapidly increasing his devotion, and as a result, all the trust in his thought subsided. अनुवाद. अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया. Translation. Arjuna, purport.
Material desire in the mind are the trash of material contamination. तात्पर्य, मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है। For that, Krishna says in the Bhagavad Gita, the mind can be a very good friend, but can be also a very bad enemy. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमारा मन जो है वो हमारा सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। Because the mind is a desire factory. Desire factory. मन जो है वो चुनाव करता है। And the mind follows two processes, sankalpa and vikalpa. और उसका कार्य है संकल्प करना और विकल्प करना। Accepted and, how do you say in English? Rejected. Yeah. स्वीकार करना, Accepted, rejected. स्वीकार करना और Accepted, त्याग करना। rejected. Accepted, rejected. From age children, from तो बचपन से ही इस प्रकार से होता है। until if the living entity is 100 years old, there is always the mind accepted and rejected. Accept, sankalpa, vikalpa. तो अगर 100 साल के भी हो जाए तब भी ये जो है संकल्प त्याग करना और स्वीकार करना वृत्ति रहती है मन की। So we must to learn how to disobey the mind. तो हमें सीखना होगा, अभ्यास करना होगा कैसे हम हमारे मन को इग्नोर करें, मतलब उसको अस्वीकार करें इन चीजों को। Yeah, because it's there always this tendency to hear the mind. तो मन का हमेशा ये टेंडेंसी रहता है सुनना कैसे। One becoming devotee, and this is difficult to follow the instructor. तो एक भक्त को ये बहुत ही दिक्कत होता है आज्ञा पालन करने में। Because for many age follow the mind. क्योंकि काफी लंबे साल तक हम हमारे मन की आज्ञा को फॉलो करते हैं इसलिए। And one day change and start to follow the Shastra. और जब उसमें बदलाव आता है कि हमें शास्त्रों को फॉलो करना जब आता है, So Srila Prabhupada writes it, material desire in the mind are the trash of material contamination. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है। By such contamination, the living being is faced with so many compatible and incompatible things that discourage the very existence of spiritual identity. ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है। Yeah, the problem is in the subtle body. ये जो समस्या है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में है। It's not only the mind, it's also the false ego. तो ये केवल मन की समस्या नहीं लेकिन हमारे अहंकार की भी समस्या है। The false ego contaminate the living entity. तो मिथ्या अहंकार जो है वो जीव को दूषित कर देता है। Also ignorance contaminate the living entity. अज्ञान जो है वो भी जीव को दूषित करता है। Yeah, it's kind of covering. False ego, ignorance is covering. तो ये जो मिथ्या अहंकार है अज्ञान है वो जीव को आवृत कर देता है। Covering of contamination. तो ये दूषण का जो उसके ऊपर कवर लगा देता है इस दूषण। There is meeting outside. I saw also few Matashis go there. It's some meeting there. Ah, yeah. It's big meeting outside. It's more devotee outside than inside, man.
So it's contamination by false ego, contamination by ignorance, तो ये दूषण जो है वो मिथ्या अहंकार और अज्ञान के कारण आता है। contamination by attachment, और आसक्ति के कारण भी ये दूषण आता है। contamination by envy, और जो ईर्ष्या उसके कारण भी ये दूषण होता है, दूषित होते हैं। envy is like fire. और ये जो ईर्ष्या जो है वो अग्नि के समान है। Envy burn the heart. वो हमारे हृदय को हमेशा जलाता रहता है। And the soul has the tendency to be attached. और आत्मा का ये स्वभाव ही है आसक्त होना। Yeah, the soul has tendency to be attached. और आत्मा का ये स्वभाव ही है आसक्त होना। We cannot delete this tendency. हम ये आसक्त होने की जो स्वभाव है उसको डिलीट नहीं कर सकते। So the perfection is when this tendency to be attached become attachment with Radha Krishna. तो ये तब शुद्ध कहा जाएगा जब हमारी ये आसक्ति जो है वो भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण से होगी तब। This is perfect. तो ये पूर्णता है। Yeah. Otherwise, because there is this tendency, the tendency can be attached with material things or spiritual activities. तो ये टेंडेंसी हमारी है कि हमारी आसक्ति या तो भौतिक चीजों से हो या तो आध्यात्मिक चीजों से। We cannot delete the tendency to be attached. We cannot delete. लेकिन आसक्ति का जो हमारा जीव का स्वभाव है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। We can change the aim. हम उसका लक्ष्य जो है उसको बदल सकते हैं। By practice, by sadhana bhakti, the mind become more and more friend. तो साधना भक्ति के अभ्यास से हम हमारे मन को और अच्छा मित्र बना सकते हैं। So there is always this fight coverture of contamination. तो ये 5 प्रकार के दूषण जो है हमेशा जीव को आवृत करते हैं। So Srila Prabhupada writing, by such contamination, the living being is faced with so many compatible and incompatible things that discourage the very existence of a spiritual identity. तो प्रभुपाद यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही वो हतोत्साहित कर देता है। So the problem is always in the subtle body. तो समस्या हमेशा हमारे सूक्ष्म शरीर में रहती है। But one day, by practice, by bhakti yoga, by devotional activities, one day the subtle body disappear. लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति योग और भक्तिमय सेवाओं का अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है उसको हम नाबूद कर सकते हैं। Mind, false ego, material intelligence, they disappear. तो ये हमारा जो मन है, मिथ्या अहंकार है, भौतिक बुद्धि है, ये सब कुछ हम उसको नाश कर सकते हैं। So in this moment we are ready to go back to Godhead. और ये समय होगा, मतलब उसी समय हम वापिस भगवत धाम जा सकते हैं। There is in the Srimad Bhagavatam, third canto 25, 33. Someone can see? Third canto, 25, 33. Then explain about how the subtle body disappear. Jarayanti ashuyoko jam nigirnam analo yataha. It's one slok of 2 lines. Jarayanti ashuyoko jam nigirnam analo yataha. Bhakti yoga, devotional activities, dissolve, I remember,
dissolved the subtle body of the living entity without separate force, like the fire in the stomach digest everything what we eat. तो ये श्रीमद् भागवतम से श्लोक है, तीसरा अध्याय, तीसरा स्कंद, 25वां अध्याय, 33वां श्लोक। उसका अनुवाद इस प्रकार है: भक्ति सेवा बिना किसी प्रयास से जीव के सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर देती है, जैसे पेट की अग्नि हमारे द्वारा खाए गए सभी चीजों को बचा देती है। Jarayantiya suyoko samnigir namanalo yattaha. 325. (25) 33. I will see what Prabhupada say in the purport. I think there is purport. 33. Yeah, Srila Prabhupada writing, Bhakti is no a far higher position than Mukti, because a person endeavor to get liberation from the material encashment is automatically served in devotional service. तात्पर्य पूर्वक बता रहे हैं, भक्ति मुक्ति से कहीं अधिक उच्च स्थिति में है, क्योंकि भौतिक बंधन से मुक्ति पाने का व्यक्ति का प्रयास भक्ति सेवा से स्वतः ही पूरा हो जाता है। The example is given here that the fire in the stomach can digest whatever we eat. यहाँ उदाहरण दिया गया है कि हम जो भी खाते हैं उसे पेट की अग्नि पचा सकती है। If the digestive power is sufficient, then whatever we can eat will be digested by the fire in the stomach. यदि पाचन शक्ति पर्याप्त है तो हम जो कुछ भी खा सकते हैं वह पेट की अग्नि द्वारा पच जाएगा। Similarly, a devotee do not have to try separately to attain liberation. तो इसी प्रकार भक्त को मुक्ति पाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। That very service to the Supreme Personality of Godhead is the process of his liberation, because to engage oneself in the service of the Lord is to liberate oneself from material entanglement. भगवान की सेवा ही उनकी मुक्ति की प्रक्रिया है, क्योंकि भगवान की सेवा में स्वयं को संलग्न करना, स्वयं को भौतिक बंधन से मुक्त करना है। Sri Bilvamangal Thakur explained this position very nicely. श्री बिल्वमंगल ठाकुर इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझाते हैं। He said, if I have unflagging devotion unto the lotus feet of the Supreme Lord, then mukti or liberation serve me as my maidservant. तो वो बताते हैं, यदि मेरी परम भगवान के चरण कमल में अटूट भक्ति है तो मुक्ति या मुक्ति जैसे मुक्ति मेरी दासी के रूप में मेरी सेवा करती है। Mukti, the maidservant, is always ready to do whatever I ask. मुक्ति मेरी दासी बनकर मैं जो भी कहूँ वह करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। So for a devotee, liberation is no problem at all. Liberation takes place without separate endeavor. तो एक भक्त के लिए मुक्ति कोई सामान्य नहीं है, मुक्ति अलग प्रयास के बिना ही उनको प्राप्त हो जाती है। Bhakti is therefore far better than mukti. इसलिए भक्ति मुक्ति या निर्विशेषवादी स्थिति से कहीं बेहतर है। Or the impersonalist position. निर्विशेषवादी स्थिति से बेहतर है। Yeah, because the materialist people want to be liberated of the material energy. जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो मुक्ति चाहते हैं निर्विशेष ब्रह्म। The impersonalist undergo severe penance and austerity, then attain mukti.
निर्विशेषवादियों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और उस तपस्या से उनको गुजरना पड़ता है। But the bhakta, simply by engaging himself in the bhakti process, especially in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, immediately develop control over the tongue by engaging it in chanting and by accepting the remnant of foodstuff offered to the personality of Godhead. लेकिन भक्त केवल भक्ति प्रक्रिया में संलग्न होकर और विशेष रूप से हरे कृष्णा कृष्णा Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare का जप करके जिह्वा को जप में लगाने से और भगवान को अर्पित किए गए खाद्य पदार्थों के अवशेषों को स्वीकार करके वे तुरंत जीभ पर नियंत्रण विकसित कर सकता है। As soon as the tongue is controlled, naturally all the other senses are controlled automatically. जैसे ही जिह्वा पर नियंत्रण हो जाता है, स्वाभाविक रूप से अन्य सभी इंद्रियां भी अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। Yeah. Vacho vegam, manasa kroda vegam, shiva vegam, udarupasta vegam, etta vegam, yovisa itadiraha, sarvam itimam pritivim sasi shiyat. Those who control the tongue, the kroda, the mind, the stomach, and the genital is able to have disciple everywhere in the world. तो ये उपदेशा उत्तर प्रथम श्लोक This is the first slok of the. जिसमें वर्णन है कि कोई जो व्यक्ति जिह्वा के वेग को, मन के वेग को, उदर के और जनेंद्रिय इन सारे वेगों को जो सहन करता है, वो व्यक्ति गुरु बनने के लिए योग्य है। Sense control is the perfection of the yoga principle, and one liberation begins immediately as soon as he engages himself in the service of the Lord. इंद्रिय नियंत्रण योग सिद्धांत से की पूर्णता है, और जैसे ही व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न होता है, उनकी मुक्ति तुरंत ही शुरू हो जाती है। It is confirmed by Kapila Deva that bhakti or devotional service is Garyasi, more glorious than siddhi liberation. कपिल देव ने इसकी पुष्टि की है कि भक्ति या भक्ति में सेवा गर्यसी है, अर्थात सिद्धि मुक्ति से अधिक गौरवशाली है। Yeah, also the jnani, he become liberate from material energy. Yeah. ज्ञानी होते हैं, वो भी भौतिक जगत से उनकी भी मुक्ति होती है। But that is not complete. लेकिन वो पूर्ण मुक्ति नहीं होती। Yeah. Be liberate for material energy is not complete. तो ये भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करना वो केवल पूर्णता नहीं है। You must be free from material energy and attached with the spiritual energy. आपको भौतिक शक्ति से आसक्ति छोड़ के आध्यात्मिक शक्ति में आसक्ति बनानी पड़ेगी। That is perfect. ये पूर्णता है। Other way, no. वरना नहीं है। By liberation, that is also some people studying the Vedas because they want to born in the superior planet and look for better situation, but this is not intelligent. तो मुक्ति के लिए कई के बार लोग वेदों का भी अध्ययन करते हैं उच्च ग्रहों में जाने के लिए और अच्छे से जीवन जीने के लिए, लेकिन ये अच्छा नहीं है। Bhakti yoga is direct process. भक्ति योगा जो है वो सीधी प्रक्रिया है। I give my life to satisfy Krishna. This is Bhakti yoga. जिसमें मैं अपना जीवन भगवान कृष्ण की संतुष्टि में के लिए समर्पित करता हूँ, ये भक्ति योग है। Nothing to me. I give my life to satisfy Krishna. मैं मेरा जीवन कृष्ण की संतुष्टि के लिए अर्पण करता हूँ। That is direct process. ये सीधी प्रक्रिया है। So birth after birth, the conditioner, that is the slok of today. Birth after birth, the conditional soul is entrapped with so many pleasing and displeasing elements that we read before, which are all false
and temporary. बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं. They accumulate due to our reactions to material desire. But when we get in touch with the transcendental Lord in his variegated energy by devotional service, the naked form of all material desire become manifested, and the intelligence of the living being is pacified in its true color. वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की शक्तियों के संपर्क में आते हैं तो सारे इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं और जीव की बुद्धि सही अर्थ में शांत हो जाती है. As soon as Arjuna turned his attention toward the instruction of the Lord, as they are inculcated in the Bhagavad Gita, his true color of eternal association with the Lord became manifested, and thus he feel free from all material contamination. जो ही अर्जुन ने भगवद गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ और इस तरह उन्हें सारे भौतिक कल्मशों से मुक्ति का अभ्यास हुआ. So, conclusion, the mind is responsible of all body activity. तो ये मतलब सार ये है कि हमारा मन जो है वो हमारे सारे कार्यों का कर है. The soul have capacity to desire. तो आत्मा के पास बस इतनी क्षमता है कि वो सिर्फ चुनाव कर सकता है. But in the conditioned state, who desire is the mind. लेकिन बद्ध अवस्था में जो निश्चित मतलब डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, वो हमारा मन होता है. So the desire of the soul appear after a certain degree of purification. तो ये जो आत्मा की जो इच्छा है वो प्रकट होती है शुद्धिकरण के बाद. Because in the conditioned state, it is the mind who desires. क्योंकि बद्ध अवस्था में मन होता है जो सारे डिसीजन लेता है. Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There is some questions. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. There is so many questions, but everybody wait, so the another ask some question. तो प्रभु जी का प्रश्न है क्या आत्मा को आध्यात्मिक बुद्धि होती है, आत्मा को बुद्धि होती है. तो महाराज, this question that does soul have a intelligence, spiritual intelligence? Pardon? Does soul have spiritual intelligence? Yes, but that is covered. The soul have everything in the pure state. तो हाँ, वो होता है आत्मा का जो मतलब सही स्वरूप में उसके पास आध्यात्मिक बुद्धि होती है. Who direct the intelligence is not the soul, is the consciousness. Who direct the intelligence is not the soul, is the consciousness. तो जो बुद्धि को जो ड्राइव करते हैं, मार्गदर्शन देती है, तो वो आत्मा नहीं लेकिन चेतना होती है. It's clear? You understand what I say? It's clear. Who driving here or there, who driving the intelligence is not the soul, is the consciousness. तो जो बुद्धि को जो मार्गदर्शन जो देता है वो आत्मा नहीं लेकिन चेतना होती है. The consciousness is individual. चेतना जो है वो अलग अलग होती है. What that mean?
consciousness be individual. That means the consciousness can be material or spiritual. चेतना अलग अलग होती है, इसका अर्थ क्या है कि चेतना जो है आध्यात्मिक हो सकती है और भौतिक हो सकती But the soul, no, the soul is always spiritual. है, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं होता, आत्मा हमेशा आध्यात्मिक होती Even if it's covered by Maya, है। the soul is always spiritual. भले ही वो माया के द्वारा आवृत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा हमेशा दिव्य है। The consciousness, no, the consciousness is individual. लेकिन जो चेतना होती है उसमें ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग होती है। Can be spiritual or can be material. वो आध्यात्मिक हो सकती है और भौतिक हो सकती है। For that, Srila Prabhupada founded International Society for Krishna Consciousness. प्रभुपाद ने इसलिए स्थापना किया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, Because the consciousness is the real identity of everyone. क्योंकि ये चेतना जो है वो वास्तव में सभी की पहचान है। So if the consciousness is material, the consciousness direct the intelligence to do nice business, nice enjoyment. अगर चेतना भौतिक है तो वो बुद्धि को मार्गदर्शन देती है किस प्रकार से अच्छे से बिजनेस करना है। But when the consciousness becomes spiritual, the consciousness direct the intelligence to do spiritual progress. लेकिन अगर हमारी चेतना जो है वो आध्यात्मिक हो जाती है तो वो बुद्धि को मार्गदर्शन देती है कैसे आध्यात्मिक कार्य। Yeah. So the consciousness direct the intelligence. इसलिए चेतना जो है वो बुद्धि को मार्गदर्शन। Intelligence is superior as the mind. जो बुद्धि जो है वो मन से ऊपर है। Otherwise, the mind eat you. वरना जो मन जो है वो आपको खा जाएगा। Yeah. For that, Prabhupada founded the International Society for Krishna Consciousness. इसलिए प्रभुपाद ने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, Because the consciousness is the real identity. क्योंकि जो चेतना है उसे वास्तविक पहचान। There was one Indian man when Prabhupada explain about the idea to founder the International Society for Krishna Consciousness. There was one Indian man, and he said, "No, Prabhupada, International Society for God Consciousness." जब श्री प्रभुपाद ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर रहे थे, तब एक भारतीय वहाँ पर व्यक्ति था, उसने बोला कि नहीं प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत नहीं, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस नहीं, लेकिन गॉड कॉन्शियस ऐसे रखना चाहिए। So Prabhupada say, Krishnastu Bhagavan Svayam, Krishna consciousness, तो प्रभुपाद उस वक्त no बताए, God, because God is not specifically. तो उस वक्त श्री प्रभुपाद बताए कि Krishnastu Bhagavan Svayam. क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान शब्द जो है बहुत सारी जगह यूज हो सकता है। Yeah, we must to become a Krishna consciousness to go with Krishna. तो हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Samaste. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Thank you for the wonderful class. Better you speak Gujarati, like that people understand. Hare Krishna. And he translates. आवाज आ रही है? हाँ, प्रभु जी प्रश्न ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदरपस्थ बेगम, तो ये जो बेग हैं, ये बेग सारे नेचुरल हैं कि नहीं? जैसे आपने बताया कि अटैचमेंट नेचुरल है, तो क्या ये बेग भी नेचुरल है? इंग्लिश में बोल। All these begs are natural or unnatural? As you said in the class, attachment is natural. Then
Wakes are natural or not? Boom, 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 boom. I don't know what he say. Maharaj, here is a question that all this urge that you mentioned in the lecture, that Uppisam's first verse, so these all urges are natural or not? Just like this attachment is natural. Pardon? What is the question? This mind urge, then jihva, tongue urge है. Can you speak without micro? Yeah. He is asking that as you said that attachment is natural, means Attachment? attachment is natural because it is in the soul. No, it's not. No, it's not. Yes. Don't natural. Prabhupada say the attachment is the tendency of the soul. Tendency. So similarly, this vacho vegam manasa krodha vegam, these 6 urges, these are also tendency of the soul, just we have to transfer it to somewhere else, or is it just the material? Is it intrinsic to the soul or it is material? Depend of the consciousness. Depend of the consciousness. For that I say the consciousness is individual. That depends of the consciousness. If the consciousness is material, the attachment will be material. If the consciousness becomes spiritual, we will be attached with sadhana bhakti, with the deities, with the book distribution, with spiritual activities. So then this urge to speak, krodha, etc. These also can be like that. If our consciousness is spiritual, then these all 6 things could also be spiritual. You told about Bacha Vegan, Manasa Krodha Vegan, Shiva Vegan, Udaropasta Vegan. That is this 5 agent this is the 5 agent of the sense gratification. The 5 agent. Because also Krodha, when someone is very, very transported by Krodha, that is also enjoyment. Understand? Krodha is one agent of enjoyment. Can you translate? Krodha is one agent. For example, there is agents of securities, okay? And there is agent. So the agent go every there, here and there to keep customers. So the sense gratification have 5 agents. तो जो क्रोध है वो भी आनंद प्राप्त करने का भी एक एजेंट है, आनंद का ही एक एजेंट है. क्रोध जो व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करता है उससे भी हो सकता है उसको आनंद आए. तो ये जो 5 प्रकार के जो अर्जिस है अलग अलग, वो भी आनंद प्राप्त करने के अलग अलग एजेंट है. Yeah, Krodha is one agent of sense gratification. Some people start to discuss and he continue the discussion. He don't want to stop because he enjoying sense gratification. तो ये क्रोध जो है वो Yeah, भी sense gratification is one agent of sense gratification. तो ये भी क्रोध जो है वो भी एक इंद्रिय तृप्ति का ही एक एजेंट है. जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही क्रोध होगी, बहुत ही चर्चा करता है तो वो भी उसको उससे आनंद आता है क्रोध के साथ चर्चा करने में. I try to remember one history. One man walk for the bridge, in one bridge. एक मुझे स्टोरी याद आ रही है. एक व्यक्ति जो है वो ब्रिज यानी कि And another man came from the other side for the walk in the bridge. और दूसरा भी व्यक्ति सामने से वो ब्रिज के ऊपर से आ रहा In the middle of the bridge, then stop. तो वो दोनों वो पुल के बीच में आके रुक And गए then start to speak, how are you, that and that. और वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगे, क्या कर रहे And हैं. one of them said, now is no good time. तो
तो एक व्यक्ति ने बोला कि अभी अच्छा समय नहीं है. That was better 100 years before when the son of the king X got the government. तो ये 100 साल पहले बहुत ही अच्छा समय था जब एक राजा के समय में बहुत अच्छा था 100 साल पहले. And the others say, which son of the king? The king X got no son. तो राजा इक्स जो थे वो उनके समय तो उनका कोई पुत्र नहीं था. And the others say, no, he got one son, yes, one son. लेकिन दूसरे ने बताया नहीं उनको एक पुत्र था. And then they started the discussion by Kroda go more and more height. धीरे-धीरे दोनों ने ऐसे चर्चा शुरू किया और धीरे-धीरे क्रोधित होने लगे और लड़ने लगे. In one moment, the one insulted the other one. और एक समय ऐसा आया कि एक व्यक्ति ने दूसरे को मार दिया. So another one took the man and threw in the river. और दूसरे व्यक्ति ने उसको उठा के नीचे नदी में डाल दिया. The man who say the son get one, the king get one son, he fall in the river. He go in the river, but he don't know how to swimming. लेकिन जिस व्यक्ति ने बोला था कि राजा का एक पुत्र था वो व्यक्ति नदी में गिर गया लेकिन उसको तैरना नहीं आता था. So he cannot go out. तो वो बाहर नहीं जा सकता था. And the water cover him. तो पानी में वो धीरे-धीरे डूब रहा था. In the last second, when he was near to leave the body, he do like that. He got one. The son got one son. जो अंतिम क्षण The king was one son. The last thing you saw was the hands out the river like that. तो वो मरने के अंतिम क्षण तक जब वो मरने वाला था उसका हाथ बाहर था तब तक वो बोलता रहा कि राजा का एक पुत्र था. Because Kroda is one agent. You understand my English? Agent. You understand what he say? तो ये क्रोध है वो एक एजेंट ही है. It's one agent of sense gratification. क्रोध इंद्रिय तृप्ति का ही एक एजेंट है. Yeah. Kroda. And the tongue. जिह्वा भी. The tongue is also one agent of sense gratification. तो जिह्वा भी इंद्रिय तृप्ति का ही एक एजेंट है. And the words also words. जो शब्द है वो भी जो बोलते Yeah. You see it after sunset, people go out from the job, from the day activities, and on the western, but also in India, some in the city in India also, then go to the pub. तो हम देखते हैं शाम को सूर्यास्त के बाद सब अपना दिन का कार्य समाप्त करने के बाद सब पब में जाते हैं. Yeah. And the speciality on the western, you see, 7 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, evening, all the pub is full of people, full. और विशेष करके पाश्चात्य जगत में देखने को मिलता है शाम को 7-8 बजे सारे जो पब होते हैं वो सब फुल हो जाते हैं. If you stop to hear, you will see everybody speak. अगर आप सुनना बंद करते हैं आप देखेंगे कि सभी लोग जो है वो बोल रहे हैं. Usually one people speak and the other hear, and after the other hear and the other speak. जनरली हम देखते हैं एक व्यक्ति बोलता है दूसरा सुनता है ऐसे होता है. But in that moment there is Rajoguna, it's not anymore. It's Tamaguna, Tamas, Rajon Tamas. लेकिन वो समय ऐसा होता है जब रजोगुण और तमोगुण बहुत ज्यादा होता है. And everybody want to speak. और वो समय Nobody want to hear, everybody want to speak. और वो समय ऐसा होता है जब सभी लोग बोलना चाहते हैं कोई सुनना नहीं चाहता है. This evening is Rajon Tamas influence. तो ये संध्या के समय रजोगुण तमोगुण का प्रभाव इस तरह से होता है. And there is the word, everybody want to say something. और उस समय सभी लोग कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं बोलना चाहते हैं. Yeah, because the word is agent of sense gratification. जो बोलना होता है वो भी एक इंद्रिय तृप्ति का एक एजेंट है. And the mind is also one agent of sense gratification. मन भी जो है वो भी इंद्रिय तृप्ति का एक एजेंट है. For that, we will read today about the control of mind.
तो जैसे आज हमने पढ़ा मन को The कैसे, mind must to become a very good friend. जो मन है वो बहुत ही अच्छा हमारा मित्र बन सकता है. And another agent, there is 6, not 5, 6 agent. 6 agent of sense gratification. टोटल 6 जो है एजेंट हैं इंद्रिय तृप्ति के. Yeah. The krodha, tongue, words, mind, stomach, and genital. तो ये 6 जो है वो वाणी है, मन है, क्रोध है, जिह्वा है, उदर है और जननेंद्रिय. This is the 6 agent of sense तो gratification. ये 6 एजेंट हैं इंद्रिय तृप्ति के. All them work. और वो सभी कार्य करते हैं. Yeah, all them work. And the mind is responsible of all body activities. तो जो मन है वो सभी हमारे जो शरीर के कार्य होते हैं उसका केंद्र है. So when the consciousness become purified, all these agents don't work anymore for sense gratification. जैसे ही हमारी चेतना शुद्ध होती है तो ये सारे एजेंट जो है वो अभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते. You ask the question? You understand? Sure? Yeah. The 6 agents of sense gratification. Those who control of all these 6 agents, that is in the first sloka of the... नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन. Yes, nectar instruction. In Sanskrit? उपदेश. Yes, Padishamrita. Yeah. And it's the first sloka. Those who control these 6 agents, he's able to get disciples everywhere in the world. उपदेशामृत का प्रथम श्लोक है जो ये 6 वेगों को सहन कर लेता है वो शिष्य बनाने के लिए योग्य हो जाता है. But for that, the consciousness must to be spiritual. लेकिन जो चेतना है वो आध्यात्मिक होनी चाहिए. Because if the consciousness is material, these 6 agents we work in sense gratification. तो लेकिन अगर हमारी चेतना भौतिक होगी तो ये 6 एजेंट जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करेंगे. Is clear? Some other questions? किसी का और प्रश्न है? Okay. Grantarat Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thai Gaur Premanande. Thank you for your attention. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness